What? That you are Lord of intelligence. And being the Lord of intelligence, whatever I may say, you should not blindly write it down. You should first understand, admit, and then write. So, Vyasadeva used to say 50 shlokas at one time. 50. And then Ganesh used to say, okay, wait, please wait. What? Let me understand. What? And then, after understanding through his intelligence, Ganesh used to write each and every verse. So, each and every verse is used, the brain is used by Ganesh for writing each and every verse. And Saraswati Nadi was flowing. So what happened? That the sound of the Saraswati was so high, that it was creating a disturbance between Vyasadeva and Ganesh. And then Mata Saraswati was requested, what? That please you go in Pata. And then immediately from that place, what happened? Saraswati disappeared and went down. Even today, the National Geographical Channel had seen that it goes down and it reappears in lava. And that's why that place is called as Triveni Sangam. So that historical, even today, if you see the place of Saraswati Nadi, the mouth is this much big, this hall. It's double this hall. That much force of water is coming down, but when you coming down that much force of water, you can walk in the water. You can walk in the water. So immediately that water goes down, and you can see that Ganeshji, that temple is there, even at that place, at Badrinath. Where if you go this side, the sound of you can hear the sound of Saraswati, but when you go towards the temple, there is no sound. It's silent. So these are the historical places that yes, Ganeshji has written this, because people have faith in Ganeshji. People have faith in Ganeshji. So we have to understand they themselves do not want that people should have problems with their life. But at least try to follow it. Try to understand it. And what is the basic thing? First, you should try to understand that this Gita has a Mahatmya. You should try to show the Mahatmya page. Which page? And in that Mahatmya page it is written. Whenever you see, first thing when you see, try to give the Bhagavad Gita in their hand. See, whether they take or not take, it's different. We are in the preaching movement. What? Preaching movement. We have to go and preach and give this Bhagavad Gita. We have to just show them the importance. If you see in the introduction, after introduction, there is Mahatmya. And this Mahatmya, there are in the preface, if you go after. So there are few Mahatmyas, if you see, and one of the Mahatmyas is Malam Nirmochanam Punsam Jale Snanam Dine Dine Sakrit Gita Amrita Snanam Sansara Malanashana. It is said, one may clean himself daily by Malam Nirmochanam Punsam Jale Snanam Dine Dine. So every day, Dine Dine, we use what? Jala for Snanam. Why? Because Malamochana, to remove the dirt. But here it is said Sakrita Gita Amrita Snanam. What? If you little bit of Amrita of Gita, if you put in your life, what happens? Sansara Malanashanam. The entire mala of this sansara will get nash. And the love which is there in your heart will come out. So you can say many, see,
Gitya dhyanam silasya pranamaya pramasya naiva shanti papanam purva janma kitasya. Naiva means all the past reactions of your previous lives get completely washed out. Purva janam kitasya. So first you have to write this, Gita Sugita Kartavyam Kim Anya Shastra Vistaram Yas Swayam Padmanabha Mukhavyam Mukha Padma Vistita. What is the need of any other Shastra when it is coming? The Gita, Lord's Ganga came from the water, from the feet. But this is coming from the mouth. And it is more powerful. People go to Ganga for taking bath. But once you take bath in this, you will get more benefit then. So you can give the Gita Mahatmya. And then we are trying to understand the first chapter, second chapter and third chapter. We'll try to understand what we have to say. First thing. The first, why the first chapter? In first chapter, basically there are 3 conversations. That's the only one shloka of Dhritarashtra. Dharma Kshetra, Kurukshetra, Samaveta, Yuyutsava, Mamaka, Pandava, Shaiva, Kim Kurvarta Sanjaya. This one shloka is, can give the reason why Mahabharata happened. Here, you have to understand, Dhritarashtra is a king. Dhritarashtra is a father, big father. For him, everybody should be same. He has 2 positions, as a father also, and as a king also. We know Lord Ramachandra, for the sake of the Praja, she, Sita Devi was also forthwith. Here we see Dhritarashtra, for the sake of son, he is putting all the dharma values, forsaking them and using adharmas. Who are their son? Pandavas are their son and they were the righteous person for the kingdom. But how that attachment, Dharma Kshetra, Kurukshetra, Samaveta, Yuyutsava, Mamaka. What is saying? Mamaka, मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे. किसके? So what is showing? Is differentiated. Mentality. Wherever there is this type of mentality, which mentality? Mamaka. Me. I mean mine. And then that mentality, especially in a king, especially in the senior person, it will create Mahabharata. It will create महाभारत से बच नहीं सकोगे. युद्ध होगा, झगड़ा होगा, परेशानी होगी. He was not blind, but he was blind from other things also. Spiritually blind. So the cause of the entire Mahabharata, if you can say, is Dhritarashtra. If he had, from the first day, taken, one view of both, like Lord Ramachandra. What? For him, he has taken this position, he forsakes everything. He forsakes all his personal pleasures. He forsakes the family matters, everything, secondary. For me, my dharma as a king is more important. So he went in the personal things. So when you take up that mentality, my and yours, there will be always clash. And if this mentality is in the superior people, definitely it will create havoc in the family, in the society, in the country, in the world. And that's why this problem is there everywhere. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare.
is showing Drishtadyumna. Oh, oh, my Guru, see this, he is the leader, he is the in charge, he is the Senapati of Pandavas. तो शिष्य, तुम्हारा शिष्य, देखो तुम्हारा शिष्य क्या कर रहा है, तुमको ही मारने के लिए खड़ा और तुम अपने आप को. So there are each and every verse of Pandavas, Duryodhan is trying to show his ahankar, trying to show that he is great and he is superior. Then what he sees, now when Arjuna is seeing, he is seeing his family members. What he sees? He sees his family. That softness is still there. Attachment. But here when Duryodhana is seeing, he is seeing all the people as enemies. What is saying? Here there are, so many shlokas are there. That he says, he compares. युद्धान विराटश्च उत्तम भोज वीर्यवान सौभद्र द्रौपदीश्च सर्व महारथा दृष्टकेतु केतीचान काशीराज वीर्यवान पृथ्वी पुरोजित कुंती भोज शैब्य. All the names he's taking. He's saying that this is there, this is there, this is there. All these people are there. They are my enemy. But what type of enemy they are? They are very, वो होगा, पावर नहीं है उतना, हमारे सामने तो नहीं है यार. क्या बोला? मिनियल है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है. That is what mentality showing. So where there is an egoistic mentality, he will always see the friends, he will always see the relatives also. But when you have a Devi mentality, even you enemies are there. In enemies, you will be seeing, apnapan. That is what we understand from the first chapter. Then he is saying, then he is comparing. Who is comparing? Duryodhana. After showing, then he says, see, I am having this. Bhima is there, protecting this thing. But, they are very limited. What are they? Very limited. And my Sena is apariya. It is unlimited. And they are limited. So this is the mentality of, which mentality? Asura mentality. He will always think himself to be great, superior than others, and want to show that I am superior. In front of the superior also. In front of, who are the superior? Bhishma, Dronacharya, Kripacharya. They are seniors. They are much greater. But then also, what he is showing? I am Yuvraj, I am the king, and you have to listen to me. This mentality, wherever it is there, it is called mother. What is it called? Mother. So Janma Aishwarya Shruti Shri. This Edha Madama Kumar. Janma Aishwarya and money. This gives mother in people. Madha Kumar. So here we can see the mother and the reason of Mahabharata. So first chapter speaks lot of things. It is not just simple, people do not understand, but each and every verse is showing something. And that's why Ganeshji has written. See, day after tomorrow, Mokshada Ekadashi, where Lord spoke. Lord could have given Bhagavad Gita to anybody. Why did he give to Arjuna only? Because he was a Grahastha, first of all. Kya tha? Grahastha. Householder. He didn't go to give to a brahmachari. He gave to a. And where did he give? In the battlefield. In the battlefield. Many people say na, केशव पढ़ेंगे टाइम करेंगे भगवत का अर्जुन को दिया. किसको दिया? जो एक गृहस्थ था. हम भी एक गृहस्थ है.
और हमारा भी युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? इसीलिए भगवत गीता के लायक हमारे लिए लायक है ये। किसके लिए है? युद्ध में भगवत गीता की थी, तब जाके उसका सलूशन मिला उसको, उसके प्रॉब्लम का। हमारा भी युद्ध चल रहा है, और जब तक हम भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, हमारे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। So these are some of the points which you should know. That Bhagavad Gita was spoken to a grahastha. He himself had children, he himself had wife, and he was doing his duty of what? Kshatriya. And in that, he was confused, and he was giving big arguments of not doing the work. But then Lord explained the Bhagavad Gita using him as the medium. एक बात ध्यान रखने का, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता एक मीडियम की तरह दी थी। एक्चुअली अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट था, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसको पूरा का पूरा शास्त्र का ज्ञान था। विराट युद्ध में, when Virat Yuddha happened, and she was Brihangala. What was she? Brihangala. She was a woman dancer in the palace of that king. Virat. Yes. Nepal. 1 year Agyatwas. Yes. In Agyatwas she was Brihangala. She had become a dancer because the strap of Yes. Apsara. Which Apsara? Urvashi. Because Urvashi had denied, Arjuna had denied Urvashi, then he will also become like that. That helped him in the that eventually helped him in Help. That is what happens. Whatever shrap devotees get, it is a boon for them. So then Arjuna, there, when Virat was coming, the son was there, only small child. And he was always joking in the palaces, Uttara, Uttara's brother. Uttara ka jo brother hai, Abhimanyu's, mother. Abhimanyu's wife. Wife. Abhimanyu's wife, Uttara. Parikshit's mother. Yes. And his, what we called as brother ko kya bolte hai? Sala. So he was 16 years and he told that I'll be fighting all the Kauravas. Wow. So then at that time, Yudhishthir Maharaj, who was working as a servant of the king, advisor, Kind of an advisor. Advisor for king. He told, you can send your son, but also send this Brihadnala. What? Brihangala. He will help him. Then what he can do? Then he just send him with him, he will help him. And he used to always boost over in there in the palaces between the women. And the women ने बोला जाओ. So to praise, that जितनी भी लड़कियां था उनको boost करने के लिए वो रथ पे चढ़ गया. When he saw who Virat. So Uttara. So when he saw the entire army of Hastinapur with Duryodhan, with Dronacharya, everybody was there. Everybody who was present in this battlefield, they were present there. And alone Arjuna and Brihadnala. And when Uttara saw this, he started shivering like Arjuna. But Arjuna was shivering because of other reasons. Out of love he was shivering. Compassion he was shivering. But Uttara started shivering, and literally he jumped out of from the Ratha and started running in the opposite direction. बोलता मेरे को मरना नहीं है. क्या बोला? जाओ. And literally Arjuna caught him. And then he started giving Bhagavad Gita Updesha. अरे, you are Kshatriya. What क्या? जैसे अभी भगवान बोलेंगे इसको. Yeah, Kurukshetra. So Arjuna knew everything. So
Arjuna then entire the Kshatriya dharma, he is speaking to whom? Uttar. He cannot go back. We have to, it's better we die over here. What? The same knowledge. Huh? He knew everything. And then Arjuna started fighting and he alone, all the people, with no enemy, he defeated everybody. So he had that power, he had the will. But Lord used Arjuna to give Bhagavad Gita in 1.5 hours for all of us. And it is said that when Arjuna only told, when Duryodhana started sharing all the ego things and all the faults, and he's ordering the senior. What he's doing? He's not taking the orders. That is one of the biggest fault of we should always respect who? The senior. Duryodhana never respected the seniors. He always gave the orders to seniors. Here, so what were the faults which we were able to find in Duryodhana in the first chapter? Ego, pride, fault finding, considering himself superior. Considering himself superior. Then when Arjuna is seeing, then he is requesting. What is doing? And here in the first chapter it is said that the Ratha Hanumanji is sitting. Who is sitting? Kapi Dhwaja. What was it called as? Kapi Dhwaja. Hanumanji is sitting. So it is said, what is the significance of Hanumanji? You say Hanumanji signifies victory. Hanumanji signifies that wherever Ram is there always will be victory. Sita will be always there, and Hanumanji will be always there. So where Hanumanji is, Arjuna is there, Yatra Yogeshwara Krishna, Tatra Part, Tatra Shri Vijaya Nitir Matir Mama. This was the last verse of Bhagavad Gita. Wherever Shri Krishna is there, wherever Arjuna is there only victory will be there. 100% is there. Morality is there. Victory is there. Fortune is there. Fortune is there. Everything is there. So these are the words Ganesh ji has written. Opulence. If you want victory, if you want fortune, if you want morality, then Krishna should be there. And archer like Arjuna. They should be there in your life. Then there will be victory. Everybody wants victory in their life. Yes. Who wants failure? And why Duryodhana had a failure? Even though he had everything. He had superior power, he had superior everything. And he also had the Narayani Sena. Every Narayani Sena of entire Lord Krishna Sena he had, but they were defeated. They were completely defeated. So if a person is having everything, but not Krishna and Krishna on his side, then definitely he will be defeated in the life. But if Arjuna, then Arjuna tells, please, I want to see both the army. And that time, Lord brings the Ratha in the middle of the battlefield. And what happens? He tells, this is the first word of Lord. Please see Arjuna, all your people, all your relatives. What he says? And when Arjuna is seeing that, then the compassion starts. What? You see immediately Duryodhana when he sees that anger is coming. What is coming? Compassion is nowhere. That compassion is there. And he's seeing them as some uncles, some relatives. He's seeing everybody over there. He's seeing everybody. कि कोई नाना है, कोई काका है, कोई काका है, कोई मामा है, बोलता इनको मार के क्या करूँगा? And
he gets overwhelmed by compassion, seeing all these people are going to die over here. So that shows the softness of a devotee. That devotee will go to any extent for Shanti. What? He will never go, if he wants to, para dukhi. If somebody is dukhi, he will be more dukhi seeing that. Vaishnava janato tere kahe, pir parai jaye. So this is the quality which he is showing, compassion. What is showing? The quality of compassion. Compassion. And he gives 5 reasons. What he gives? 5 reasons for not fighting. What are the 5 reasons he gives? Compassion, sinful reaction, enjoyment, sinful reaction, Varna Sankara, that all the society will be become, and the 5th is indecision. So 5 reasons he gives for not fighting. 5 reasons, please write. First is showing compassion. Then, I do not want to enjoy anything. I do not want to enjoy anything without them. I want to enjoy with them. If they are not there, what is the use? क्या करने का, किसको दिखाएंगे हम? दिखाने के लिए भी कोई चाहिए. हाँ, सब मर जाएंगे. I do not want. It's better I will go in the forest and then sinful reaction. इतना पाप कौन करेगा? क्या बोले? हाँ, महापाप. And then after they die, all the women will be Kulashaya, Pranashayanti. That what will happen to all the women and the children? They will be polluted. Varna Sankara will happen and the society will get disturbed. Unwanted children will happen. There will be no tarpan, there will be no. He is giving many reasons. What is giving? Lupta Punda Kriya. So there is, and then indecision. Ultimately, he is giving so much lecture, but he himself is confused what to do. And then, still then, Lord is not giving, after showing these 5 reasons. Here that first chapter finishes. What happens? First chapter. So 2 mentalities we can see. Which mentality? Daivi mentality and Asuri mentality. One is following the dharma and one is adharma. So ultimately, Lord will always take the side of dharma. And the victory will be always be of dharma. So we have to see if we really want which party we have to take in our life. And then the second chapter starts. Till second chapter, he again is saying, he's showing his in confusion. Karpanya dosho apata svabhava vichami tvam dharma sambhura cheta yashreyasya nishchita bruhitanne shishyasya hamsadi man tvam prapanna. Before that, unless until he didn't told this shloka, Lord didn't give him the knowledge. Lord told, पागल हो गया क्या? Before this. What he says? Klebyam aswagama. ये छक्कापन. Klebya means what? ये छक्कापन कहाँ से आया? Lord is this weakness, klebya. The word that is used. Lord is using this hard word. That you are Kshatriya. What are you? नपुंसकता ये कहाँ से आ गए तुझमें? युद्ध भूमि में. And why Lord is saying these words to him? The reason why Lord is saying, I always give in my 3-day Bhagavad Gita course that boy and girl wanted to marry. क्या बोलने लगा? शादी करना था दोनों को. बहुत साल निकल गए. क्या हुआ? मैच ही नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा? लड़के का मैच ही नहीं मिल रहा है. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल तक ढूंढते रहे. कितने साल तक? 10वें साल क्या हो गया? मैच मिला. तो दोनों परिवार वाले क्या हो गए?
अरे वाह 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 वाह, क्या हो गया, 10 साल के बाद इसको मैच मिल गया, जल्दी शादी करो, जल्दी ब्याह करो, जल्दी सब करो। क्या करो? तो जल्दी ब्याह करो। तो 18 चैप्टर अभी 2 पर। हाँ, तो इसीलिए ये सेकंड चैप्टर में आज हम 2 ही चैप्टर करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे थोड़ा और चैप्टर। हम लोग पूरे महीने में सिर्फ गीता अभी डिस्कशन करेंगे। We are not going to discuss anything. These 4 weeks, this December, we have to encourage each other to understand Gita more and encourage, because this is Gita Jayanti Mehina, we will be speaking on Gita, main important points. So you should be knowing, you should be convinced that what we are giving is real diamond to them. When that they will understand, their life will change. So your convincing कि भाई दूसरे चैप्टर में ये लिखा हुआ है, पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है, you have to speak. आपको खुद को नहीं मालूम होगा और आपको कन्विंस नहीं रहेगा तो आप दूसरे को कन्विंस कैसे कर पाओगे? अरे लेवे नहीं लेवे बात दूसरी है, but at least your preaching work should go on. Yeah, please try to understand what is it. If you want, not want, that is a different issue. मेरा काम हो गया, मेरा दिसंबर महीने का सेवा हो गया। क्या हो गया? मैंने आपको समझा दिया। अभी लेना, भगवान ने भी अर्जुन को समझा और बोला तेरे को करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। लास्ट में Do as you please. As you want. Last chapter. So you have to convince yourself first that what I am saying is 100%. So here Arjuna also was not given the knowledge. Arjuna was showed him the first his duty. Tera duty क्या है? You are warrior. And I told you that शादी का माहौल था, शादी का फिक्स हो गया, शादी का डेट आ गया, एवरीथिंग इज डन, 1 महीने के अंदर शादी हो गया, पूरा हॉल बुकिंग हो गया, केटरिंग बुकिंग हो गया, पैसा दे दिया, बैंड वाला आ गया उसको दे दिया, पुजारी आ गया, लड़की आ गई, उधर से आ रही है वो बारात सब आ रही है और गा रहे हैं सब, और सब आ गए और लड़की को बिठा दिया और अचानक लड़का बोलता है मुझे शादी नहीं करना है। बोलता है क्यों? बोलता है शादी करना बहुत लफड़े का काम। क्या बोलते हैं? लफड़ा है, पूरा लफड़ा है। कैसे निकलेगी ये लड़की? आपको मालूम है शादी के बाद क्या क्या लफड़े होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मेरे को अभी शादी नहीं करना, मेरे को हिमालय में जाना। क्या? If that time that person is telling to his father, then what he will be saying? क्या बोलेगा? अभी बैठ, ये लेक्चर बाद में कर। So that was what was happening with Arjuna actually. Everything was done. Lord himself went 5 गांव। क्या बोले थे? क्या बोले? 99.99% आप रखो। क्या बोले? 0.01% इनको दे दो। सुई के नोक के ऊपर में नहीं दो, उतने भी नहीं दो। हाँ उतनी ही, युद्ध के बिना। If they are warriors, they should take it from me. That was an open challenge in the. And it is said, if the warriors are challenged, they have to show their will. They cannot run back. And ultimately, Duryodhan इतना बेशरम था कि in that sabha he tried to capture the Lord. But वो बेशरम के बाद में भी वो गया द्वारका और पूरी सेना लेके आया। उसका मैं चाहिए कि सेना चाहिए, आप नीचे सेना लेते। And that is Duryodhan mentality. उनको भगवान नहीं चाहिए, भगवान की वस्तु चाहिए। What they want? People ने आज सबको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रावण को सीता चाहिए थी खाली, राम नहीं चाहिए।
तो सीता आ जावे मजा आ जावे, वैसे पैसा आ जावे तो मजा कर लो, क्या है? बट लक्ष्मी इफ विदाउट नारायण इट इज चंचला. व्हाट इज इट? Not stable. नॉट स्टेबल, और अनस्टेबल कर देंगे तुमको. क्या कर देंगे? वो आएगी एक रास्ते से, जाएगी 10 रास्ते से, ऐसे. So this is what we learn from the second chapter, that Arjuna was never given the knowledge in the first. It is only when he told that Napunsakta दिखाऊंगा, you are warrior, and this time is what? बेल बज गया है. क्या हो गया? शंख बज गया है, बेल बज गया. अभी खाली लेक्चरबाजी नहीं चलेगी, मुझे अभी शादी नहीं करना नहीं चलेगी. क्या? मैं जाऊंगा जंगल में. ऑल दिस इज गुड, लेकिन इस मोमेंट पे ठीक नहीं. At that moment when Arjuna was speaking, all these things was not at all appropriate. It was his duty to fight, and that is what Lord is saying. Then Lord, after karpanya dosho apada swabhava pritchami tvam dharma samudacheta यह श्रेयस्य, यह मेरा श्रेय क्या है? एक होता है प्रेय और एक श्रेय. There are two types, श्रेय and प्रेय. What is my श्रेय? कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यह श्रेयस्य निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमा त्वां. शिष्य, मैं आपका शिष्य, प्लीज मेरे को गाइड करो. एंड देन लॉर्ड लाफ्ड. और वो पहला था कि भगवान पहले हंसे. तो शास्त्र में कहता है कि भगवान ऋतु भूमि हंसे क्यों? तो हंसे मैंने रीजन के लिए. उनको ये लगा कि जो जिसके लिए मैं जन्म लिया था भगवत गीता बोलने के लिए, वो टाइम आ गया. और इसको माध्यम से बना के मेरे भविष्य में लाखों करोड़ों जीव का उद्धार होगा. क्या होगा? उद्धार होगा. इसलिए खुश हो रहे थे. बैटलफील्ड में सबके सामने. हाँ, तो बाद में बिकॉज ही कैन सी फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट. और क्यों खुश हो गए भगवान? कि अभी तक ये मेरा मित्र था, अभी ये शिष्य हो गया. लाइन पे आ गया. तो जब तक हम शिष्य नहीं बनते ज्ञान नहीं मिलेगा. क्या नहीं मिलेगा? हम बाप बन के ज्ञान नहीं दे सकते, हमको शिष्य बन के ज्ञान देते. और जब शिष्य बने या तो सबसे पहला तो भगवान ने उसे डांटा. अपने आप को पंडित मत समझो. जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते. क्या नहीं करते? शोक नहीं करते. पंडित लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा पंडित ऐसे वाले लोग दूसरे को सोल्यूशन देते हैं, लेकिन अपना सोल्यूशन के पास उनके पास एक सोल्यूशन सॉल्व करता है. खुद के 10 प्रॉब्लम रहेंगे घर के अंदर और दूसरे को 10 सोल्यूशन दे. ये करो, वो करो, वो करो. तो वो है यहाँ पे भगवान. इसीलिए दैट इज व्हाट इज कॉल्ड असोचन. तो पहला ये है. एंड देन लॉर्ड, और सबसे पहला लेसन जो भगवत गीता आपको समझाता है. आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे भगवत गीता देने के टाइम पे. किसी को भी अगर आपको नॉलेज देना है तो सबसे पहला जो फर्स्ट लेसन भगवत गीता वो ही सिखाना है. और सबसे पहला फर्स्ट लेसन भगवत गीता क्या है? डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल. क्या है? आत्मा और शरीर का जब तक आप नॉलेज नहीं दोगे, बाकी कितनी भी बात करोगे सब बेकार होने वाला है. Anybody starts your argument, try to bring him on the first lesson. किस लेसन पे? जैसे अभी उस दिन वो प्रभु जी मेरे को भी बता रहे थे, हमारे वो प्रभु जी बैठे, अरे शंकर भगवान में दूध क्यों चढ़ाने? क्या बोला? क्या मिलता है उससे? गरीब को दो. किसका भला होता है ये दूध चढ़ाने? there are Mayavadi philosophy, this philosophy, this. Then again we have to bring to them that भाई आत्मा और शरीर एक नहीं है. We have to again and again bring this point that आत्मा और शरीर different है. आत्मा की संतुष्टि भक्ति से होती है, आध्यात्मिक से होती है. The Atma can only get satisfaction by. Then we have to give the entire
example of Atma and Sharir, car and the driver, the cage and the bird. किसका? कार एंड ड्राइवर. कि भाई ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, पक्षी अलग है, पिंजरा अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है. गाड़ी को धोने से, गाड़ी को मेंटेन करने से ड्राइवर मेंटेन नहीं होता है. गाड़ी में पेट्रोल डालने से और वही पेट्रोल ड्राइवर को पिला दोगे तो काम नहीं होने वाला है, मर जाएगा बेचारा. बोलेगा कि उसको भी संतुष्टि हो जाएगी, क्या हो जाएगी. और वही हमारा हाल होता है. हम शरीर को संतुष्ट करते सोचते आत्मा संतुष्ट हो जाए, क्या हो जाएगा. सो अनलेस एंड अनटिल किसी को भी बात करना हो, यू हैव टू ब्रिंग देम टू द फर्स्ट पॉइंट. बॉडी एंड सोल का जब तक आप डिफरेंस नहीं लाएगा वो आपको पूरा घुमाते रहेगा. कृष्ण भगवान ने शादी क्यों की, कृष्ण भगवान ने रास क्यों रचा है, इतना इतना डांस क्यों किया. अरे भाई तू छोड़, पहले तू अपने आप को बोल, तू अपने आप को जानता है क्या. दे विल टेक यू कहां से कहां उड़ा के लेके जाएंगे. और हमको कहां से कहां लाना है, हमको फर्स्ट चैप्टर पे किधर लाना है. भाई तुम कौन हो. शरीर और आत्मा में भेद है. क्या है, आत्मा की जरूरत अलग है, शरीर की जरूरत अलग है. और ये प्रॉब्लम क्या होता है, आत्मा की जरूरत हमें कब मालूम पड़ती है, मरने के टाइम पे. उसके पहले नहीं मालूम पड़ती. चला गया बेचारा, चला गया, क्या बोलते, चला गया चला गया चला गया. तो कौन चला गया, आत्मा चला गया, आत्मा. और बाद में हम लोग वो पेपर में लिखते हैं नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पादका. वो ना वो पेपर के नीचे एक हेड में लिखते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले. उस टाइम लिखते हैं उनकी आत्मा को, और जीवन भर शरीर की शांति. आत्मा की तो कोई बात नहीं. वही है कि गाड़ी और ड्राइवर को मिक्स कर दिया. क्या कर दिया. तो भगवत गीता का इसलिए अर्जुन सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 श्लोक का भगवान ने बोले थे. कितने श्लोक का, खाली आत्मा के ऊपर, ये दिखाने के लिए उसमें कि भाई शरीर और आत्मा में डिफरेंस है और रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट. आत्मा के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. शरीर 2 प्रकार का है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ग्रॉस एंड सटल. वी हैव टू एक्सप्लेन दैट कि भाई ये शरीर जो है ये 2 शरीर है, एक है सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल, और एक आत्मा का शरीर. जब हमारा ये शरीर का नाश होता है, एट दैट टाइम सूक्ष्म शरीर और आत्मा दूसरे शरीर में, इट इज ओनली द आउटर शरीर हमारा नाश होता है. बाकी जो ये सूक्ष्म शरीर है और आत्मा ये साथ में नेक्स्ट शरीर में जाते हैं. और जो तुमने मेंटालिटी क्रिएट की है वो हिसाब से हमें क्या मिलती है, बॉडी मिलती है. और आत्मा का प्रेजेंस कैसे मालूम पड़ेगा. कोई पूछेगा आत्मा है तो कैसे प्रूफ कर सकेंगे, दिखाओ. कोई बोलेगा दिखाओ, क्या बोलेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है, क्या नहीं है, वो तुम नहीं हो. एक घड़ी तुम्हारी है लेकिन तुम घड़ी, द वॉच इज योर्स, द टेबल इज योर्स, द बुक इज योर्स, बट यू आर नॉट द बुक. The shirt is mine, but I am not the pant is mine, but I am not the pant. The hand is mine, but I am not the hand. The leg is mine, I am not the leg. The body is mine, but I am not the body. Then who am I? I am the soul inside the body. That is one proof. Another thing, there are many things which cannot be seen. हवा देख सकते हैं क्या? But we can feel it. माइंड है क्या? नहीं है. तो कैसे मालूम पड़ेगा माइंड है? दिखाओ, निकाल के दिखाओ.
माइंड कैन बी सीन बाय द फेस, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है. We have intelligence. Show me. We can't show. It can be understood by his action. बुद्धू है के बोलते हैं ना, बोलने के बाद मालूम पड़ेगा बुद्धू है के. Only knows when he speaks. Only knows when he speaks. तो इंटेलिजेंस बाय हिज एक्शन. ईगो है, ईगो इज देयर, शो नहीं. तो जैसे हवा, जैसे माइंड, जैसे बुद्धि, जैसे ईगो हम देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, वैसे आत्मा दिखती नहीं है लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है क्योंकि बहुत छोटी है. व्हाट इज इट? बहुत छोटी है. कैसे अनुभव किया जाएगा आत्मा का? चेतना से, जीवन से. जब तक आत्मा है शरीर जीवित है, जब आत्मा निकल जाती है तो उसके बोल देते हैं चला. क्या बोलते हैं? सो आत्मा इज द प्रूफ ऑफ लिविंग. व्हाट इज इट? आत्मा है इसलिए शरीर है. सो आत्मा इज स्पिरिचुअल एंड बॉडी इज मटेरियल. मटेरियल चीज कभी भी स्पिरिचुअल चीज को सेटिस्फाई नहीं करना. इसी बात पे आपको प्रीचिंग करना है नए लोगों को. नहीं तो आपको घुमा घुमा के किधर किधर से आप उसको आंसर करते रहेंगे और आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे. क्या करते रहेगा? और कभी भी आप उनको जीत नहीं पाओगे. कभी भी उनको आप, क्योंकि उसका वो आर्ग्यूमेंट चलते रहेगा. सो यू हैव टू अगेन एंड अगेन ब्रिंग टू द सेकंड चैप्टर. क्या लाना है? उसका बचपन से जो लर्निंग हुआ है वही कैरी फॉरवर्ड. नहीं तो ठीक है. अर्जुन का भी वही चल रहा था. दिखा रहे थे कि वो अपना एक वो बता रहा था. क्या बता रहा था? इंटेलिजेंस बता रहा था. लेकिन इंटेलिजेंस आने के बाद में भी वो वाज कंफ्यूज्ड. ऐसा सबका हाल है पूरा. आप सॉल्यूशन मांगने जाओगे तो सब कोई सॉल्यूशन देगा लेकिन अपने लिए कोई सॉल्यूशन नहीं. राइट? यही अर्जुन का हाल था. ही इज गिविंग सॉल्यूशंस, ही इज गिविंग रीजंस फॉर नॉट fighting. I am right. But ultimately Lord is saying that he is using this thing. Like time हो गया. तो second chapter deals with what? The soul and body. Soul and ये तो hand. Then after the soul it deals with how one should be the peace of mind. क्या डील करता है? Yes. There are many shlokas where you will get peace. Soul qualities, So that entire 30 shlokas are there, but after 30 shlokas to 70 shlokas, 72 shlokas in the second chapter, peace of mind. क्या है? How you will get a peace of mind? उसमें लिखा हुआ है कि माइंड अगर आपका बॉडी से अटैच्ड है, क्योंकि बॉडी इज नॉट यू, यू आर सोल. व्हाट आर यू? एंड दिस सटल बॉडी जो आपको मिला हुआ है, इस सोल को सेटिस्फाई करने के लिए मिला हुआ है. लेकिन हम क्या करते हैं? सटल बॉडी को यूज करते हैं जो ग्रॉस बॉडी है, क्या है? उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग. द सोल इज नॉट सेटिस्फाइड. वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द ग्रॉस बॉडी. पिंजड़े को साफ कर रहे, पिंजड़े को धो रहे, अंदर पक्षी है उसका कोई केयर, आत्मा का कोई केयर, आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है नहीं मालूम. एंड दैट इज द डिफीट ऑफ द पर्सन. जाना है हमको चर्च गेट, लेकिन दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए किधर, और सोच रहे हैं कि चर्च गेट आज आ जाएगा. दिल्ली का पूरा भारत घूम के आ जाएगा क्योंकि उल्टी ट्रेन में बैठे हो किधर. तो आपका मन उल्टी जगह लगा हुआ. किधर लगा हुआ? सटल बॉडी है वो उल्टी जगह लगा और वो कंटैमिनेटेड है. क्या है वो? गंदा हो गया है बिकॉज ऑफ अटैच विद द बॉडी. और उसको क्लीनिंग चाहिए. क्या चाहिए? और क्लीनिंग का प्रोसेस बताया है. आत्मा का रिक्वायरमेंट है हरिनाम
और उसको क्लीनिंग जो मंथ का होगा हरिनाम, then we can give them harinam. So if we explain this properly, then we'll take up harinam. So second chapter, first chapter हमने आज कर लिया. तो whenever you speak, किसी से भी भागवत गीता में बात करो, please bring him to body and soul. अगर आप कोई भी और चैप्टर की बात करोगे, आपको उल्टा फेंक देगा वो. क्या करेगा? क्रॉस के पर क्रॉस क्वेश्चन हो, क्रॉस के उसको वही लाना है कि आप कौन हो. जब तक वो नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, तब तक आप उससे बात करना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेकार है. क्या है? And that is the lesson that we learned from the first and second. Next time we will discuss the third, fourth, fifth chapter, and like this we will try to complete many, so that when you are going and giving the Bhagavad Gita, आप जब जा रहे हो भगवत गीता के बात बोल रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कन्विंस रहना चाहिए कि आप क्या दे उसको. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. श्रील प्रभुपाद की जय. Ora, what is